have a composition of 13 sectoral indices, which together, or companies from these sectors, different companies are a part of Nifty 50, and we have the top 50 most liquid and the most highly traded securities forming a part of Nifty 50. So, since you guys are beginners, you guys are on the learning stage, I would strongly urge कि आप NSE की वेबसाइट पे जाओ, आप निफ्टी का फैक्ट शीट पढ़ो, एंड निफ्टी की फैक्ट शीट आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सिक्योरिटीज कौन से क्राइटेरियाज मीट करने के बाद they become a part of Nifty. So there are certain criteria that a company has to follow to be a part of the benchmark index. Not all companies get to be a part of it. Also, the 50 companies across Nifty belong to different sectors, but all the companies belonging to one sector are not a part of Nifty. So, for example, if we talk of FMCG, we have ITC as a part of Nifty, we have Britannia as a part of Nifty, but we do not have Dabur as a part of Nifty, although Dabur is also a FMCG company. Why is it not included or included? We can look at other ways, Then we have securities which have a derivative contract, which does not have a derivative contract. Abhi, I don't want to touch upon derivative. Let us discuss what we are doing now. So, ye sheet, I think, is quite clear already. Like I said, beta, we know, the market beta is 1. Beta more than 1 means the market is more volatile. The beta less than 1 means the market is, the market volatility is low, and we can invest in stocks with low beta when the markets are not performing well or they're falling. And the opposite goes for when the markets are bullish and we expect a positive outcome out of the market. Now, correlation again, it gives you both the direction and the strength. So remember, correlation gives you the direction also and the strength also, right? So if the correlation is 0.6, then in that case, it is a positive correlation and moderately correlated. Now we have this, I have already discussed. Then we could see that the correlation of the Nifty services and Nifty 50 was 0.92, which was expected. Why? Because again, Nifty financial services contributes a major part of Nifty. And, let's just revise that. Anybody, can you tell me what weightage is it? Like, what weightage does Nifty financial services have in Nifty 50? You can check here if you want. So it's close to 35.6%. Okay. Now, after Nifty financials, we have Nifty IT. So before I move to Nifty IT, let us try and study the Nifty FMCG. कि इसमें क्या रहा है? Okay, so I have taken the dependent variable to be Nifty FMCG and the independent variable to be Nifty 50. So stock beta जब हम calculate करेंगे ना, we'll take a simpler example so that you people understand, and then you can always use such real market data figures to calculate beta, and you can always go back and check on different websites, different portals पे आप check कर सकते हो कि जो आपने बीटा कैलकुलेट किया होगा ना for the last 1 year या for that duration, और जो market में easily beta available है. And by the way, this is called unlevered beta. So I am not touching upon the concept of unlevered beta and levered beta, but there is something called unlevered and levered. तो जो unlevered beta होता है वो ये consider करता है कि 100% equity है. It does not take into account the debt structure. So it only tells you the beta related to the entire equity. ठीक है, 100% equity assume करके then we calculate this beta. So this beta is also called the unlevered beta. ठीक है, correlation again 0.6 आया है for FMCG. What are the reasons? Again, you can find out. तो मैंने आपको 2 ways बताए हैं अभी तक to analyze any company. Okay, can be कि आप कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को देख रहे हो, बीटा कैलकुलेट कर रहे हो, कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स. So regression statistics अभी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए आई एम नॉट टचिंग ऑन दिस, बट इफ यू वांट आई कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस वेयर आई कैन एक्सप्लेन इट कैसे कैसे करते हैं एक्सेल पे. तो आपको डेटा एनालिसिस टूल पैक एड-इन्स में जाके लेना पड़ता है. आप जब वो एड इन कर लोगे यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट दिस. नाउ गाइज ट्राई एंड सी, कैन यू गाइज फाइंड आउट द कॉमन थिंग बिटवीन बोथ. तो मेरे पास कोरिलेशन मुझे पता है इतना है, एंड आई हैव द रिग्रेशन टेबल. 1 सेकेंड टाइम स्पेंड करो और मुझे बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है. Yes, the figure 0.615, that figure is common right beside multiple regression, that one, the first component of the regression table. Right. So correlation को regression statistics table में multiple R भी बोलते हैं, and R square is the square of the multiple R. So basically, can I say R square is the square of the correlation? Can I say this? Yes or no? Yes. Right. And adjusted R square, we adjust for some exogenous variables, which I'm not
taking right now, it will be too much for you guys to remember अभी. So adjusted R square जो होता है ना, वो हमें ये बताता है कि what is the dependency of the dependent variable on my independent variable. तो अगर मुझे adjusted R square को का analysis करना है, या let's consider financial services only, यहाँ पे adjusted R square कितना है? Can any one of you read out for me in terms of percentage? तो ये कितना percentage हुआ? How much percentage would this be? Tell me. 84%. 84.9. 84.9%, roughly 85%. So as an analyst, मैं क्या बोलूंगी कि 85% of the variability or the changes in the dependent variable. So which was my dependent variable here? The financial services. So I will say 85% of the variability or changes in the financial services is explained by my independent variable. Which is my independent variable? The benchmark index. So can you believe 75% of the changes in Nifty financial services is due to Nifty 50 moving up and down? So these kind of things do play a role when you start your journey, when you want to study the beta, the correlation, the variability of one variable with respect to other. Okay, so I had done this for all the 13 sectors, you know, see. So not just this, I have also tried to calculate the maximum return, the minimum return. Then, you know, we can have something called the y is equal to mx plus c equation, which is the slope formula. So all these things are a little technical. Let's not get into that. Maybe when you know, if you would be inclined towards buying my courses in the future, I will be talking about it. I will also deliver more sessions for you guys. Okay, again, for every sector, I've tried to do the same. Nifty auto देखते हैं चलो. Nifty auto में क्या हो रहा है? 59% डिपेंडेंसी एक्सप्लेन हो रही है. ये 59% वेरिएबिलिटी जो है ऑटो सेक्टर में, वो निफ्टी एक्सप्लेन कर पा रहा है. ऑल्सो कोरिलेशन अगेन क्लोज टू 1 but not very strong as compared to what? As compared to Nifty Financial Services. Nifty Financials का सबसे strong correlation है हमारे analysis में. And just to tell you, this is for the this is just for a 6-month period, guys. So this is just from the period starting from 14th of June till 1st of January 2021. So January to June 2021 का analysis है ये. So you can always take the real-time figures using the NSE website. वहां से you can download the historical prices and you can work around these things. ठीक है? Nifty Healthcare, again Nifty Bank. See, again Nifty Bank has a high correlation. Why? Because Nifty Bank also provides financial services, right? And we have a lot of banks as a part of the Nifty 50. Again, private banks have the correlation as 0.8. PSU banks का correlation कम था इस period में for the 6-month duration. Consumer durables, FMCG, again you can see सबका बीटा भी देखो आप चेंज हो रहा है. किसी का बीटा बहुत ज्यादा है, किसी का बीटा इज क्लोज टू 1, किसी का बीटा इज वेरी लेस. यहाँ पे देखो, ठीक है. So all these things I've done. If you want, I can share this with you people, but I still want कि आप खुद से करो real time latest figures पे. ठीक है. So चलो अब let's move forward and calculate the beta from the scratch. So can you guys confirm if you can see see another Excel file that I've opened? So can you see the basic example वाली sheet? Yes, ma'am. ठीक है. चलो साथ में करते हैं. I'm not gonna do anything. You people will help me do the same. I have taken very hypothetical figures here first. So I have considered the State Bank India के returns for the first 5 years and also the market returns. या इसको हम consider कर सकते हैं Nifty 50 के returns बोल सकते हो आप. चलो अब मुझे इसका average return निकालना है. तो how do you calculate average returns? एक फॉर्मूला तो सीधा है, सम. इसका सम करेंगे और सम को किससे डिवाइड करेंगे बताओ गाइस. मीन फॉर्मूला, हाँ 5 से. प्लीज पार्टिसिपेट. मेरे को ऐसा लगता है कि आई लॉस्ट माय कनेक्शन. ठीक है. तो अगेन आई कैन डू द सेम थिंग हियर. 31%, 6%. बट दिस वी विल नॉट डू. हम बच्चे नहीं है, बहुत आगे आ गए हैं. So we'll do is equal to, obviously Excel में कोई फॉर्मूला होगा जो मुझे एवरेज डायरेक्टली निकाल के दे दे. What is that formula? Is it AVG? Is it average? Is equal to mean? अगर किसी ने यूज किया है तो मुझे बताओ कि एक्सेल में एवरेज कैसे निकालते हैं. Average. Exactly. So we can simply write average. Then guys, you can press the tab option. You know, I'm just telling you some of the shortcuts. कभी भी आप ऐसे मत करना कि आपने एवरेज लिखा, इसको डबल क्लिक कर रहे हो या मैनुअली ब्रैकेट लगा रहे हो. आपने AVG लिखा और जैसी एवरेज आता है, यू कैन गो हियर, प्रेस द टैब की
on your keyboard and automatically it will open the syntax. The syntax is average number 1 number 2. तो हम ये पूरा array select कर लेंगे, ठीक है? We select the array and the return is 5%. Again, I can simply select this, press shift right arrow and then control R. Okay? So अगर मुझे इस वैल्यू को नीचे ड्रैग करना है, R मतलब क्या होता है? राइट में. अगर मुझे नीचे करना है तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी माय शॉर्टकट? कंट्रोल, इट शुड बी कंट्रोल व्हाट. यहाँ पे मैंने राइट में करना था तो मैंने कंट्रोल आर किया. अगर मुझे नीचे ड्रैग करके कॉपी करना है तो क्या शॉर्टकट यूज होगा? बताओ. कंट्रोल डी. ओके, सो इफ आई वांटेड नीचे देन आई कैन से कंट्रोल डी, बट ये हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए. हमें राइट में चाहिए था तो हमने कंट्रोल डी कर दिया, वो यहाँ पे कॉपी हो गया. ठीक है, एवरेज चलो ठीक है. अब आई टोल्ड यू बीटा कैलकुलेट करने के देयर आर 2 फॉर्मूलाज. गिव मी द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट बीटा, जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था. फटाफट से मुझे बताओ कि कैसे कैलकुलेट किया था हमने. फॉर्मूला क्या है बीटा कैलकुलेट करने का? Covariance divided by the variance. Covariance of the market. So you will not give me a incomplete formula. जब भी आप बोल भी रहे हो ना, तो get into this habit कि हमें बोलना है covariance of the market returns and the individual stock returns divided by the variance of the market. ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए यहाँ पे. हमें कोवेरियंस चाहिए मार्केट का और रिटर्न्स का, और हमें क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए मार्केट का. तो वो कैलकुलेट करते हैं. पहले कोवेरियंस कैसे निकालते हैं एक्सेल में? किसी ने निकाला है कभी? किसी को पता है फॉर्मूला? तो बताओ मुझे. मुझे नहीं आता इसलिए I'm asking. टेल मी. कोवेरियंस ट्राई करते हैं. चलो, कोवेरियंस कुछ आ रहा है? कैन यू सी? अच्छा, व्हाट इज दिस कोवेरियंस डॉट पी एंड कोवेरियंस डॉट एस? तो यहाँ पी और एस क्या है? Average of products or deviation, the one thing which is written there, is it that? Like when you clicked on it, there's a pop-up. So I think it's that. Okay, The so average of notice the product. difference here. It's dot p says returns. Population and sample value. Exactly. So Population population and sample, but here let us consider it as a sample. Obviously, it is a sample. Okay. So sample variance. Now array. Array would be this, comma this. I want to calculate the covariance between the market returns and the individual returns. So what is the covariance? This. What else do I need? I need the variance of the market. But हम दोनों का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो वेरिएंस का फंक्शन होता है var.s. ओके, अगर मैंने कोवेरियंस डॉट एस या सैंपल वाले फॉर्मूला से निकाला है तो मैं वेरिएंस भी डॉट एस या सैंपल वाले फॉर्मूला से ही निकालूंगी. रिमेंबर दिस. I select var.s, then I select this SBI returns. It will give me the variance. This is the variance. Now tell me guys, a higher variance is better or a lower variance is better? And whatever you answer, try to give a reason. So variance is risk in general. So I have made it very simple for you. Variance ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? Less. Correct. So let's see if the variance of the stock is less than the market. So variance of the stock is less or more? बताओ. ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है? Of the The stock. first one is more. ठीक है, चलो डन. अब स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑल्दो वी विल नॉट रिक्वायर इट एज सच, बट लेट अस अंडरस्टैंड. स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको रिस्क बताता है, बट फॉर बीटा कैलकुलेशंस वी कंसिडर वेरिएंस इन द डिनोमिनेटर. बट इन जनरल इफ यू टॉक अबाउट रिस्क देन वी कंसिडर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एवरेज रिटर्न्स. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है इसका? ठीक है. अच्छा, अगर मुझे वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? Square root. स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं एक्सेल में? SQRT. So SQRT is the function to calculate the square root. So is variance the square root of standard deviation or standard deviation is the square root of variance? Variance is the square root. Variance is the square root of standard deviation. No, sorry. The opposite. Exactly. Standard deviation square is equal to variance. So if I calculate the square root of the variance, what do I arrive at? The standard deviation. So can I say that variance, मैंने क्या किया? Square root of the variance. So standard deviation is simply the square root of the variance.
Okay, चलो ये हो गया, मैंने covariance, I've calculated the numerator and this is my denominator. So let me just highlight my numerator and denominator. Tell me, how do we calculate beta? What was the formula, guys? Let's write it here. So somebody just mentioned it was the covariance of what? Of the market returns and the stock returns divided by the variance of the market, right? So I can write var m and here I can write var m and s. Just for simplification, आपको ऐसे नहीं लिखना है किसी भी Excel file में. Okay, so beta कैसे calculate करेंगे? Covariance divided by the variance. So is the beta more than 1, less than 1 or equal to 1? And I want any one of you to analyze this beta for me with respect to SBI. Tell me, is it more volatile, less volatile? What would you comment? It is definitely more risky. More risky, more volatile. Okay. Now again, let us go back to basics and see what has happened. Okay. जब मेरा Nifty 50 fell by 9%, what was the fall in SBI? 9. Can I justify this again? So beta is a two-way thing, guys. It's a two-way deviation. Okay. So if my beta is more than 1, definitely it will be more risky, it will be more volatile. But then again, what do we do? अगर यहाँ पे Nifty मुझे एक positive return दे रहा है, then SBI will give me more returns. But what happens in a downside market? The opposite happens. If Nifty falls by 7, SBI returns fell by more than 7%. So this is what we should consider as analysts when we are picking up stocks, especially in a volatile market. चलो, this was the first formula. What was the second formula to calculate beta? मैंने आपको कौन सा which formula did I tell you in Excel do we use to calculate beta? Tell me first. So it was a slope function, right? So we simply do slope. Okay, so for simplification, I am taking the stock to be a dependent variable and market to be an independent variable. And just to mention that known X, so X is always your independent variable and Y is considered as an independent variable. Because if you come from a maths background and if you look at the equation of slope, then slope is defined as y is equal to mx plus c. So यहाँ पे m क्या होता है? I'm sorry, this is plus. M is the slope while y is the dependent variable, x is an independent variable and c is the coefficient which is a constant. ठीक है? So this is the mathematical formula for slope. तो अगर मैं Excel में calculate करूँ अपने slope को, ठीक है? Let's do it here only. So I'll calculate my beta using slope function. So slope, what is the known y? I'm taking it to be the stock. Stock is dependent. Okay. Comma, then I'll take known x, which is this. Any difference in the two approaches, guys? Any difference in the number? Any difference in the result? No. Right? So can I say I can calculate beta using both the formulas and it gave me the same result? Obviously. So for simplification, you can use the slope formula. However, we can always go by the traditional method of calculating slope beta, which is covariance upon the variance. Okay, now this was, acha, now tell me, very, very, very important point here. Out of this, what is your total risk? How, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो systematic risk लिखा है, unsystematic risk लिखा है, but मैंने आपको अभी बताया था कि total risk कौन measure करता है? Tell me. Is it the standard deviation in general or is it the variance? It is the standard deviation, right? So standard deviation measures the risk. तो ये क्या हो गया? ये हो गया total risk. अब total risk में मैंने आपको क्या बताया था? इनमें से कौन सा risk calculate कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते? Can we calculate both of them? Or which one of these can you not directly calculate? Tell me. Yes, guys, anyone? Are you sleeping? We can calculate systematic risk, but for unsystematic, we just subtract it from total risk. Right. So, and can you recall the formula for systematic risk that I told you? That is like beta square, and we multiply it with the variance of the market. Beta square, we can have it in the bracket. Okay, like just writing here like that, so that beta square and market variance. Okay. So help me with the formula. What was the calculated beta? So अलग-अलग calculate करते हैं, चलो ताकि confusion ना हो. Beta का square, that means इसका square. अब इसका square कैसे निकालूं Excel में? Can I take to the power as what?
टेल मी, पावर साइन कैसे आता है एक्सेल में, पता है किसी को? shift plus 6. शिफ्ट प्लस 6, करेक्ट. सो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो आई राइट टू द पावर 2. तो ये आ गया मेरे पास. मार्केट का वेरिएंस कितना था? दिस इज द मार्केट वेरिएंस, करेक्ट? ठीक है या नहीं बताओ? Yes, ma'am. ठीक है. अब सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे? बीटा स्क्वायर इनटू द मार्केट वेरिएंस. वेट, ठीक है. लेट अस कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज. ये क्या हो रहा है? 68. दिस इज वेट, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. ठीक है. तो मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क कितना आया है? 68.4%. व्हाट इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क? 100% माइनस दिस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इन दोनों में से, या एज आई वुड आस्क, आप इसमें से कितना परसेंटेज डाइवर्सिफाई कर सकते हो और कितना नहीं कंट्रोल कर सकते? यस, टेल मी. 32% can be diversified. 32% of SBI, or 32% of the total risk in SBI can be diversified. Very true. It can be controlled, it can be diversified. However, you cannot directly control the 68% of the risk inherent in SBI's stock. अब आप इस 68 को डील कैसे करोगे? Hedging कर सकते हो. You can hedge SBI with its call options, put options in the derivative markets. You can use arbitrage. You can benefit from the price movements. Lots and lots of things that we will learn when we talk about FRM or financial risk management. ठीक है. तो FRM again is a very separate topic. I can always talk about it. I really love doing the derivative part of it. So we can always discuss that. So अभी के लिए I hope this is clear. How do you calculate systematic risk? तो मैंने simply लिखा beta square into the market variance, and unsystematic I subtract it from 100. Simple. ठीक है. अब what is the first step, guys? Tell me. मुझे सच में आप लोगों से एक इनपुट चाहिए इस स्टेज पे. I want to calculate Tata Steel का beta, but I have the stock prices. What will I need? What is the first step? यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन था? What are these? Return. हाँ, और यहाँ पे क्या गिवन है? प्राइसेस. तो आपको परसेंटेज रिटर्न्स का ही मिलता है अवेलेबल. विल यू बी एबल टू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन? मतलब डेली कितना परसेंटेज चेंज आया ये निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, कहीं गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक्सेल में. हाँ या ना बोलना है बस, बताओ. No, ma'am. तो क्या करें फिर? व्हाट इज द सोल्यूशन? टेल मी. सोल्यूशन भी बताओ. क्या निकाल सकते हैं हम एवरेज रिटर्न्स डेली? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला द करंट ईयर माइनस द प्रीवियस ईयर अपॉन द प्रीवियस ईयर. ठीक है. इसको सिंपली यहाँ पे फिल हैंडल बोलते हैं इसको, जो कॉर्नर में आ रहा है. इसको डबल क्लिक करोगे ना तो सबके लिए हो जाएगा. तो आई हैव टेकन दिस फॉर द लास्ट 4 years, guys. So this data is for the last 4 years. No, not even 4. I think I've taken it from 2016. 6, 7, 8, yeah, almost 5 years. Okay. Then again, you can use the same formula here. This minus this upon divided by the previous year. I think I've taken this as 19. Okay. Again, sorted. I think this should be clear. There should not be any queries in this. Then again, average return. Average formula use करेंगे. ये पूरा जो हमने रिटर्न्स कैलकुलेट करे हैं सेलेक्ट कर लेंगे. सेम फॉर निफ्टी. आई होप यू गाइस कैन डू इट. चलो मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ. ठीक है. कैन यू सी निफ्टी ने सिर्फ 6% दिया है, whereas Tata Steel, which belongs to the steel sector, has given a 14% return in the last 5 years. Average. This is the average. Okay. Annualized average return क्या होता है? अच्छा, how many trading days are there in a year? किसी को कुछ आइडिया हम कितने ट्रेडिंग डेज जनरली कंसिडर करते हैं एक ईयर में? 250. हाँ, तो हम लेते हैं, हम considering all the public holidays, the Saturday, Sundays, the weekends and everything, we have roughly 250 trading days out of the 365 days in a calendar year. ठीक है. तो annualized return you can simply multiply. No, we'll not do it here. Annualized return का formula अलग होता है,
So just wait for it now. Daily variance. Again, variance आपको calculate करना आता है. I am just doing it for this. Here you can see, आप P भी ले सकते हो, आप S भी ले सकते हो, but let's take P क्योंकि इसे 5 years का data and we have huge chunk of data for Tata Steel. ठीक है. Annualized variance, again you can multiply this by 250 क्योंकि 255 trading days होते हैं. Standard deviation, या तो आप square root ले लो variance का, या आप क्या use कर सकते हो, STDEV.S. So you can calculate using the standard deviation. Again you can choose these. ठीक है. Coefficient of variation is standard deviation upon the mean. तो standard deviation annualized ही लेंगे हम. Annualized standard deviation divided by the annualized average return. तो average return अभी के लिए ले लेते हैं 50. There should be there must be, okay, 34%. All right. Although guys, annualized average returns calculate करने का एक proper अलग formula होता है, but due to the interest of time, I am not going into that. Just for simplification purpose, for your assignment purpose. Anyway, आप अभी के लिए याद रखो. I will let you know if time permits, or we can have a separate session some other day. ठीक है. So rank निकालनी है अब हमें. Rank का formula अभी देखते हैं. Wait, I think you will be able to calculate everything, right? Beta, systematic risk as a percentage. बस मुझे बताओ आप किसका calculate करोगे. So systematic risk मेरे पास निकल जाएगा beta square into the market variance. So you can take the annualized market variance, ये वाला amount. यहाँ पे जो भी आपका कैलकुलेट होके आएगा आप वो ले सकते हो, एंड यू कैन टेक बीटा फ्रॉम हियर, स्क्वायर द बीटा एंड मल्टीप्लाई इट विद एनुअलाइज्ड वेरिएंस. अगेन सिस्टमैटिक रिस्क का परसेंटेज क्या होगा? सिस्टमैटिक रिस्क डिवाइडेड बाय व्हाट? टेल मी वेरी क्विकली. सिस्टमैटिक रिस्क इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल रिस्क. एंड यहाँ पे टोटल रिस्क कौन बता रहा है? कौन सा फिगर, आई मीन कौन सा कॉम्पोनेंट मुझे बता रहा है टोटल रिस्क? It's the annualized standard deviation, right? So I will divide this amount by the annualized standard deviation to see how much percentage is systematic risk with respect to the total risk. So ये सब आप कर सकते हो. Correl के लिए you can use the correlation function. Again, for coefficient of determination is the square of the correlation coefficient. तो आप ये भी calculate कर सकते हो. Okay. So all these things I would like you people to do. And one more thing just wanted to add before time ends is that हम consolidated data भी बना सकते हैं for the entire sector. So I have taken the steel sector here and I have taken 5 different companies belonging to this sector, जिसका मैंने सारा पहले से calculate कर लिया है. Not correlation हम कर सकते हैं, like I said. एक बार बस आप rank function देख लो कैसे use होता है. So we use the rank.eq and then it says the number. Okay, so number मैंने आपको क्या बोला था कि हम अपने एक सेक्टर के सारे स्टॉक्स को रैंक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो लोअर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द बेटर इट इज, बिकॉज सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. that is to earn 1 rupee, or for 1 rupee of average, what is the risk that an investor is taking? This is what is determined by coefficient of variation. Now I will take coefficient of variation, then I will select the reference table, which is my entire table, पांचों वाले coefficient of variation, and order मैं रखूंगी ascending. Why ascending? मुझे चाहिए कि जो सबसे छोटा coefficient of variation है वो first rank मुझे बताए, and जो सबसे ज्यादा बड़ा है that should give me the 5th rank. So first represents a company which has high risk which has low risk with respect to the returns that it generates. ठीक है, तो यहाँ पे can I conclude that JSW Steel should be my first ranking in this particular sector or the steel sector? Yes. And this is the kind of analysis I want people to do. JSW Steel के बाद what is the next company you can pick up in this sector is Tata Steel for this time duration. Okay, so you should usually consider a 5-year time duration or a 3-year time duration. So yeah, that is it. I mean, you can always, calculate returns and maintain an Excel file. So I have similarly done it for the sugar industry here. So yeah, that's it. I mean, that's it from my end, guys. I hope it was fruitful for you people. You people must have learned something new. And yeah, I'm open to any queries if there are any. Thank you.